Hello everybody. Welcome to iExamBee's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. In this video today, I am going to continue with the series that I have started for discussing various concepts under law. You are also open to come up with your concepts if you want to discuss or have any doubts or queries. आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. I will come up with a video on the same. आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक सेबी, आरबीआई, आईबीपीएस, एसओ, लॉ ऑफिसर एक्सेट्रा, तो सारे एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज आप हमारे iExamBee के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. द डेमो ऑफ दीज ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल. Now it is the election time, counting process is going on and soon the result will be declared on 4th of June. तो अब आप आपकी तैयारी को gear up कर दीजिए. Gear up your preparations for the examinations. Various opportunities are there for law officers, for all law graduates, I would say. Lot of opportunities are there. Check out all the opportunities at our website. कोई भी डाउट हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे हम काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे ही रिजल्ट आएगा हम काफ़ी सारे एग्जाम्स, काफ़ी सारे वैकेंसीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अपनी प्रिपरेशन को गेयर अप कर दीजिए. एंड डू रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन hello@iexamBee.com. You can also call us on the number 9205524028 and don't forget to subscribe to our YouTube channel Legal Bee. Download our app from the Google Play Store and prepare 50% faster for job preparation. Today's topic is relating to the prisoners, specifically under trial prisoners. We are going to discuss about their bail. Bail for under trial prisoners, as under CRPC, we had a specific provision which was an amended one. अब उस प्रोविजन से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1st of July. एंड जो भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो इम्पोर्टेंट भी है एंड उसमें अब न्यू लॉज में चेंज भी आने वाला है, डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है एग्जामिनर्स के लिए टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. So this is how you can prepare yourself on the trending topics, on the important topics from exam point of view as well. Bail for under trials, there was a provision in CRPC, that is section 436A, that deals with maximum period for which an under trial prisoner can be detained. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये है section 479. The title remains same, but there is a change, and I would say it is not a minor but a very big change because this is going to have a drastic effect, especially on the overcrowding of prisons. Let us see the provision. 436A of CRPC, where a person has during the period of investigation, inquiry or trial under this code of an offence under any law, not being an offence for which the punishment of death has been specified as one of the punishments under that law. यानी कि ये provision उनके लिए applicable नहीं है. Focus on the area and the bracket. The offence which is punishable with death as one of the punishments under that law. यानी कि जो भी ऑफेंस के लिए एक भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अगर डेथ है तो उन ऑफेंसेस के अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. इफ दे आर अंडरगोइंग डिटेंशन एंड दे हैव कंप्लीटेड half of the maximum period of imprisonment specified for that offense under that law. Suppose their imprisonment period is around 10 years and they have completed more than 5 years in the prison, then they shall be released by the court on a personal bond with or without sureties. यानी कि इनको ये default bail मिल जानी चाहिए. डेथ अगर उसमें कोई एक पनिशमेंट है तो वो हीनियस क्राइम्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. There are proviso clauses in it, provided that the court may, after hearing the public prosecutor for reasons to be recorded in writing, if they feel that this detention should not be given, then they may also grant it. Provided further that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than maximum period of the imprisonment. अगर suppose उन्होंने maximum period complete कर लिया है, यानी कि अंडर ट्रायल है, अभी तक उनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उनका मैक्सिमम पीरियड अगर 10 इयर्स का है, उन्होंने सारे 10 साल निकाल लिए जेल में. ऐसा होता है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए भी हैं. देयर आर लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन दिस एज वेल. देन डेफिनेटली दे शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली बिकॉज दे आर नॉट प्रूवन गिल्टी एंड दे हैव कंप्लीटेड द एंटायर टर्म ऑफ प्रिजनमेंट. Explanation clause talks about the computation.
जब आप ये पीरियड कैलकुलेट करते हैं, so the period of detention should exclude the delay in the proceedings that has been caused by the accused himself. If he is causing unnecessary delay on his part, if there is some delay, then that is not going to be considered in his period of detention. अब ये सिंपल प्रोविजन है जो CRPC में एग्जिस्ट करता है. अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं BNSS में? Section 479 of BNSS deals with the same provision, maximum period for which an under trial prisoner can be detained. But can you see this bracket area? As I told you, ब्रैकेट एरिया के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ. अब पिछले प्रोविजन में तो सिर्फ डेथ था, बट यहाँ पे उन्होंने एक ऐड किया है फॉर द पनिशमेंट ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स अंडर दैट लॉ. यानी कि जितने भी ऑफेंसेज हैं जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक पनिशमेंट है, तो उस सब ऑफेंसेस के अंडर ट्रायल्स के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. Because of adding life imprisonment, many of the under trials have been excluded out of the scope of this provision. And उन सारे under trials को अब bail नहीं मिल पाएगी because of this change. Already there is a very big problem of overcrowding in the prisons. We are not having enough space, and if the bail provisions are becoming stringent, then this is going to have a serious effect on this problem of prisoners, prisons, overcrowding, etc. So this is how we will be seeing various changes that will be coming as a result of this change in the bail provision. So if that person has undergone a detention for a period extending up to half of the maximum period of imprisonment specified, he shall be released on bail, except these two punishments if are there. तो उसको हाफ पीरियड का प्रोविजन सेम है. एक और एक प्रोविजो क्लॉज यहाँ पे ऐड किया गया है. If the person is a first time offender, if he is not convicted anywhere in the past for any other offense, then he shall be released within 1/3 of the maximum period of imprisonment. यानी कि अगर उसका imprisonment period है 10 years and वो 10 सालों में से उसने 1/3 period spend कर लिया है. 1/3 period कितना होगा? approximately 3.5 साल. approximately I would say. सो अप्रॉक्सीमेटली अगर उसने 3.5 साल के आसपास निकाल लिए हैं, तो वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होने की वजह से उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी. Provided further that the court may, after hearing the PP, this is the same provision as we have seen in CRPC also, longer than the 1/2 of the period or release. If suppose he feels that it should be continued detention, then he has to give reasons and then that may be continued. Provided also that no such person in case if detained for a period more than the maximum period of sentence, then immediately he has to be released. ये भी provision same है. Explanation clause भी same है that अगर accused कोई delay cause करता है तो उस period को consider नहीं किया जाएगा. Now there are two more additions over here. Clause 2, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or multiple cases is pending against the accused, यानी कि उस पर एक से ज़्यादा अगर केसेस चल रहे हैं तो भी उसको ये बेल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड वी हैव सीन दैट कई बार ऐसे ऑफेंडर्स हैं जिनके ऊपर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, भले ही वो छोटे मोटे केसेस क्यों ना हो, या फिर कभी कभी टेक्निकली क्या हो जाता है, कोई ऑफेंस होता है जो स्पेशल लेजिस्लेशन में भी अट्रैक्ट हो जाता है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल पोक्सो केसेस बहुत सारे हैं. POCSO Act is also applicable and IPC is also, which will be now BNS, that will also be applicable. So at a time they are having 2 cases going on or they are having 1 case going on. For example, ऐसी चीज़ें provisions की वजह से हो सकती है, तो उनको भी ये bail provision applicable अब नहीं होगा. And this superintendent of the jail is going to decide that whether the person has completed 1/2 or 1/3 of the period of the imprisonment as mentioned, and accordingly his release application will be processed. That will be processed by the superintendent of jail. So ये एक procedural area था. So इस तरीके से इस provision को काफ़ी हद तक change किया गया है, and this is relating only to the under trial prisoners जिनका decision अभी तक नहीं हुआ है, जिनका trial अभी तक courts में pending है. So this will commence from 1st of July. Let us see how things are going on. We can discuss on all these concepts here at iExamB. As I told you, you can bring your concepts in the comment section if you want any discussion. I will definitely try to bring a video on the same. Don't forget to subscribe to LegalB. Prepare 50% faster with us at iExamB. Download our app from the Google Play Store. Check out all the features of our full course available on the app as well.
Thank you, everybody.